unit 5 related to IHRM, and I'll discuss some expected question related to your examination. Okay? So wait a moment, I'll set this slide. Question discussion kala Deepak online ye karta. See, what is training? The concept of training already we have discussed in the last class, right? What is training? The concept of training already we have completed in your last class. So now I'll discuss why training is important for the organization. See, training is important because it is based on the training program. While the organization will conduct training program to the employee, so it basing on the training, the employee they can enhance their knowledge, skills, and ability, and through they can implement all those things at the time of while they'll work in the different area, and basing on this it can increase the productivity of the organization, right? So what will happen? So training is important because based on the training the productivity it can be increased. It can also reduce the supervision. Supervision means that much of guidance it may not be required. Because why it may not be required? Because here the already we have the organization already the organization instructs something to the people. That's why basing on this the people they can work properly without any kind of defect, any kind of means what, any kind of any kind of things, any kind of defect, they can do their work properly. So it may not be need that much of supervision. Apart from this, also we can reduce the the absenteeism and turnover. Means through proper training, the employee they can know how to work in the organization. That's why the employee they will not leave the organization. The fear, anxiety, tension, all those things it may be removed, towards the work and towards the basically job. That's why they can do their work properly, and the turnover, employee turnover mane kona loko chhadi ki poleba na. So they will not leave the organization. They will work for the organization in a longer duration of time. Apart from this, also we can reduce the absenteeism. Also we can reduce the accident. So due to proper training, the employee they can work in the different area. It may be in front of dangerous machinery, in front of the hazardous area. They can work with full of confidence. So any kind of accident, we can reduce the accident also, right? Apart from this, we can reduce the wastage. We can reduce the damage. All those things we can reduce. E jota ki sabu factor tamo ta bhitere asila, right? E sabu hela amaro training ro importance. So why the training is important? This is the most important factor. That's why training is important for the organization. Now, what are the types of training? See, different types of training. It is there in the basically we can say different types adapted by the organization, and it is basically the organization conducted towards the employee and providing variety types of training towards the employee. Now, the types of training we can it is classified into different category. It relates to induction orientation training. Already we have discussed the induction orientation training, right? So induction means what? Induction, it is a welcome program for the new employees, and orientation training means it is a short kind of trainings, few days training that conducted by the organization while the employees are that is for the specifically for the newcomers. That is the induction and orientation training. Formal informal training program. See, formal training, it is kind of the training that conducted by the organization. Now, in formal training, basically we can say it is as per the organization rules, regulations, and guidelines. The superior will conduct the training program to the subordinate, right? जोटा कि एना जो आमे ट्रेनिंग टा जोटा आमे जो इना तुमको ट्रेनिंग टा देउछु, this is the purely formal training, right? And the informal training, it is there in the part of the formal training ame कहि परिबा. जेमति कि for example ना मोइना जो तुमको ट्रेनिंग टा दोउची एटाला formal training that is decided by the organization, that is the time, that is the duration, that is everything that fixed by the organization. This is called formal training. But धर आमे कहिबा ना कोर्स सरी गला परे तमे किछि बुझी पारलनी, तमे किछि जानि पारलनी, कोठी तमरो डाउट रहिला न, सेते बेले तुमे आसीबो मो पाखो बुझिया पय मो सेही ऑर्गेनाइजेशन रे ही मेंबर. बट सेठी कोन हबो, but that time, that date, that may not be fixed by the organization, but
And anyhow, I'll clarify your doubt and I'll give some kind of जदि मु किछि गोटे टाइम तुमको स्पेंड कली जो सेतिरे तुमको किछि ट्रेनिंग देली सो सेटा को हमें कहबा इनफॉर्मल ट्रेनिंग formal training informal training both are part of the organization but formal training as per the rules regulation that decided by the organization and informal training that we can give to the employee as per the requirement एमती नाइ कि सुनो प्रति कथारे नाइ कि हमें गोटे पेन एंड पेपर धरि बसिबा हमें पूरा लेखिकिरी पूरा ये दबा सेमती तो नुह ना so we कोन करिबा so as per the requirement we can provide the employee the superior can provide training program to the subordinate that is the informal training short term long term training short term which is a shorter duration of time and long term training it is maybe the longer duration of time right and as like pre entry post entry training while the employee before start the work before start their job no that is the pre entry training selection हे सारिबा परे चाकरी स्टार्ट हबा पूर्वरु काम स्टार्ट हबा पूर्वरु जो ट्रेनिंग ता दिया जिवो that is the pre entry training post entry training after the while the employee will start his or her work and he'll start its activity no during the work the organization can conduct the training program that is the post entry training काम join हबा पूर्वरु जो ट्रेनिंग ता में दबा that we can call as a pre entry right काम join करिबा परे काम करूचे but organize we need some kind of training that we can call as a post entry training centralized departmental training that what we can do here no every individual every department every group that all the person they will be there in a one place right समस्ते गोटे जगह रहिबे will be there in a one place and the organization will conduct a common kind of training program to the employee that we can call as a centralized training program जदि हम एक एग्जांपल दबा centralized training program suppose एना धरो कोरोना आगु को आछि हमें कोन ता पे स्टेप नै परिबा ना what are the step we will take no to face this kind of pandemic situation धरो जदि हमरो किछ आगु को सेंते सिचुएशन आसिला सो जोटा हमें कॉमन टाइप रो ट्रेनिंग थिबो ना जोटा कि हम समस्त को इन्फॉर्म करबा चाहछे we want to inform all the individuals right so सेटा हमें कोन करबा ना that we can call as a centralized training program every individual will be there in a one place and we can provide the training program now departmental training program that is what departmental means that is the individual department individual trainer individual department basing on the department and basing on the requirement we will conduct the training program marketing department different training HR department different training financial department different training different department having different kind of training program that is the centralized and departmental training program right refresher training see those are the existing employees are there in the organization they know everything how to operate the business how to do their work but still the organization providing training program that basing on this they can basically what they can refresh their knowledge means they can aware about something new things no some new things some new technology kind of things धर आमे कोन करबा ना एठी धर आमे गोटे काम करथिले जो काम जो आमे तो जानि छ सब ऑर्गेनाइजेशन ऊपर बट धर ऑर्गेनाइजेशन किछि गोटे नुवा जिंस करबा दियोछि राइट कि किछि गोटे अप टू डेट डे बाय डे अप टू डेट होछि मार्केट अप टू डेट होछि टेक्नोलॉजी सो से सब जानिबा पई लोक मानन को आमे कोन करबा ना आमे किछिटा ट्रेनिंग टाइम टू टाइम दउथबा so that they can enhance their knowledge they can refresh their knowledge that is a refresher training program and training for promotion means what no after training program while the organization will provide training to the employee so based on the training they can promote and they can handle their future job future task duties and responsibility मैंने कोडी थिले मैनेजमेंट ट्रेनी रे मो प्रमोशन हला पर कोठी गेले असिस्टेंट मैनेजर मो मैनेजमेंट ट्रेनी असिस्टेंट मैनेजर तो टास्क पर डेफिनेटली डिफरेंट अछि काहे की डिफरेंट अछि हम कहितली प्रमोशन रेट कैन एनहांस योर टास्क ड्यूटीज रिस्पांसिबिलिटी नो प्रेस्टीज सब किछ हमर एनहांस हबो तो से कामटा को मु केमते स्मूथली हैंडल करि परिबे हाउ आई विल हैंडल द टास्क वेरी स्मूथली नो वेरी इफेक्टिवली दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग फॉर promotion I can handle the future task duties and responsibility right so this is all about your types of training let's discuss the methods of training we can call there are two methods in the training program the methods of training again it is classified into two category one is on the job method bhalla bhabare मन रखिबे सब गोटे गोटे बड़ बड़ long question हैला so on the job method and off the job method on the job method means it is the place of work of the job method it means it is the away from the place of work amane kono on the job method whatever may be the training in the on the job jota ki ame kahiba
whatever may be the training will be conducted by and provided by the superior towards the subordinate in a different forms, right? एटा इंटरेक्शन है कहा कहा भितर सुपीरियर सबऑर्डिनेट भितर वैरायटी फॉर्म रे हमें ट्रेनिंग ता दबा बट एट द प्लेस ऑफ वर्क जोटी की सुपीरियर कंडक्ट करिवो ट्रेनिंग सबऑर्डिनेट को से ट्रेनिंग कोन जॉब रोटेशन एटी कोटे आसला तमर फर्स्ट जेआईटी जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग हमें कहबा देन कोचिंग मेंटरिंग जॉब रोटेशन and apprenticeship training, right? Internship and apprenticeship training, these are the on the job method. Now what do you mean by JIT, job instruction training? Moi kon kahili now whatever may be the in this method the superior will conduct training program to the subordinate. Superior subordinate it got a best bonding achi na the ame kon training kon na iti dui jana great role play karanti ki superior and subordinate. Superior playing role as a trainer, subordinates playing role as a trainee, and the situation, the process we can call as a training, right? एठी हमें कोन कहिले ना सुपीरियर ट्रेनर हैला सबऑर्डिनेट ट्रेनी हैले प्रोसेस टा हमें ट्रेनिंग कहिले त माने एठी कोन हैला सो हमें कोन करबा एठी जेआईटी अडॉप्ट कले किए ना सुपीरियर तो देबो सबऑर्डिनेट मान को एट द प्लेस ऑफ वर्क रे तो जेआईटी जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग कहूची जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग रे हमें कोन कहबा सी जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इट बेसिकली कोन करबा ना हियर द सुपीरियर अडॉप्टेड फोर फेज चारटा फेज अडॉप्ट करचंती सुपीरियर टू प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू सबऑर्डिनेट्स कोन ना फर्स्ट इन द जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग फर्स्ट व्हाट विल हैपन नो the superior prepare something towards the subordinate ta mane first hame training delu mena kon kochi mu tama man ko prepare karuchi apna man ko prepare karuchi so training trainer ro kam kon first preparation mu kon kareli na student man ko training deli prepare kareli saman ko right once preparation jetele preparation sorry kala mu jetele mor kam sorry kala my part job jetele complete he jibo then what kahar kam start habo na students man kar employee mane kon karibe they have to present preparation. Once preparation over, the trainer will prepare towards the training. Now it is a turn of the trainee. They have to give their presentation. Kiye debo presentation? Trainee mane debe presentation. Kaha ko presentation debe? In front of the superior. So it is superior kon janibo? Na performance. So it kon kahili? First la preparation, then la presentation, then la performance. Performance की analysis करिवे ना best of the trainees trainee मानकर presentation based on the trainees presentation the superior will judge the performance of the subordinates that trainee मानकर performance को हम एठी judge करिबा हैला तापर आसीबो कोन we can give the follow up तापर हम दबा ना finally it is the follow up stage follow up किए देबे superior देबे काहा को देबे trainee मानकर देबे कोन देबे ना कहार बेस्ट परफॉर्मेंस अछि कहार पोर परफॉर्मेंस अछि कहार मिडिल लेवल परफॉर्मेंस अछि कहार परफॉर्मेंस पूरा पोर हाईली एक्सीलेंट नो सैटिस्फैक्टरी इट इज कोर टाइप रो कहार परफॉर्मेंस अछि so basing on this we can judge the individual performance and basing on this the superior will take the step for the further training program that is the meaning of JIT superior adapted four step that is the preparation presentation performance and follow up right then asla amare kona job instruction par asla coaching is a daily based training program coaching hame kon kahile na coaching is a kind of daily based training program ethi superior playing role as a coach ko superior kon role play kochandi na gote coach role play karanti and giving training program to the subordinate ko training diyanti it is a kind of informal training program jota ki ame eta koiba coaching is a kind of informal training program मोइना कहिथिल ना दुई प्रकार ट्रेनिंग प्रोग्राम अछि गोटे हला कोन हमर गोटे हला फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम आ गोटे हला इनफॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम सो कोचिंग टाइम हला इट इज बेसिकली द सुपीरियर इट इज डेली ऑब्जर्वेशन हम सुपीरियरिटी कोन करिवे कोचिंग इज अ काइंड ऑफ डेली ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग एंड डेली फीडबैक किए कोन करिवो ना सुपीरियर डेली ट्रेनिंग देबे डेली ऑब्जर्व करिवे एम्प्लॉय माने को आ तांकर डेली फीडबैक कलेक्ट करिवे से माने एक्चुअली रे कोन कले जो थिरे ट्रेनिंग मु देली सो सेथिरे से माने किते परफेक्ट अछंती किते इफेक्टिव अछंती सेटा हम एठी एनालिसिस करबा राइट सो इट इज सुपीरियर कोन करिवे ना सुपीरियर विल व्हाट ऑब्जर्व द टू द सबऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करिवे and what the subordinate will do and what they should not to do that explained by the superior towards the subordinate explain the right way no right things towards the subordinate and basing on this it is all together all this kind of training it can be possible for the in the organization that is a kind of ame kon kahile though it is a daily based training program that is the coaching
जमते आमे कहूचे को आमे को तू कोठी की जाउचे ना कोचिंग जाउचे कोचिंग सेंटर जाउचे त माने कोन को वर्ष रे थरे आमे जाउचे कि डेली जाउचे गोटे फिक्स टाइम रे सेमती एडी सुपीरियर रोल प्ले करबे एज ए कोच then chalantu mentoring now what do you mean by mentoring it is basically what we can say the senior manager the superior can groom the subordinate kaha ko groom kariba subordinate ko grooming a junior person ko se groom kariba right एठी कोन करिवो see the mentoring means the superior playing role as a mentor as like as the coach जेमते हमर गोटे कोच रो रोल प्ले करले एठी समते गोटे हम मेंटर रोल प्ले करिबा and it is a responsibility of the superior to groom the subordinate groom माने कोन करिवो to basically if whatever may be the weakness it is there in the subordinate it is a responsibility of the superior to give that kind of training to the subordinate superiority responsibility hela se training the subordinate ko so that the subordinate can maximize its strength groom kariba mane kona the strength ko maximize karibo se right so it is the responsibility of the superior playing role as a mentor eti gote mentor role play kari ki kon karibo to helping to supporting to guiding the subordinates so the subordinate can enhance its knowledge skills and ability and the subordinate can be more effective and more efficient at the workplace it is a responsibility of the superior right आपण कहबे कि ना सुपीरियर काहे केते करबा सुपीरियर करबे ना के करबो कोन बालो पासी करबे बिल्कुल तो नो एट सुपीरियर ही करबो सबऑर्डिनेट रो रिस्पांसिबिलिटी सुपीरियर रो से रिपोर्टिंग अथॉरिटी सो सेति पे मो केते परफेक्ट हेई परिबे दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी माय सुपीरियर सो सेति कोच रो रोल प्ले करू कि मेंटर रो रोल प्ले करंतु कि जीआईटी करंतु कि जॉब रोटेशन करंतु जहा करंतु बट बस हमको गोटे बेस्ट पर्सन करिबार रिस्पांसिबिलिटी ला सुपीरियर right so this is what the mentoring then is like job rotation means what see job rotation means here the employee already कोठी job rotation आपण माने को बुझेइतिले starting रो बुझेछि कोठी job rotation बुझेछि transfer रे बुझेछि right हमर types of transfer रे गोटे job rotation थिला see job rotation कहूछि here the employee can move कोना now one department to other department in a specific period of time गोटे specific period of time रे समाने कोन करिवे मूव करिवे department to department so it is a movement of training from one department to other department within the organization जोटा कि हमें कहिबा कि गोटे department रो गोटे department already कहितली it is a intra departmental or it may be the interdepartmental no it is a one kind of rotation it is a one kind of transfer right so basing on this the यार फायदा कोन ना basing on the movement of the employee well the employee will move intra and inter department na so here the employee will learn variety kind of things so employee can develop it is diversified knowledge skills no multi skilled it can be possible and the employee can develop that much of ability the employee can handle any kind of task duties and responsibility that much of that the employee can be capable to handle any kind of things so this is what the job rotation then as last one is the apprenticeship and internship training internship apprenticeship training ame kon kaiba it is a on the job method where the एडी कोन करा जिवो ना employees the जति सब employee अछंती they will apprenticeship internship training it implies but the employee will work in the organization employee man जते काम करूथिबे ना so basically they are working in the organization so at the time of apprentice they can it is a meaning of no हम एठी कोन कहिबा ना it is the on while you are learn एठी हमें कहिबा कि हमें कहिबा सपोज गोटे एग्जांपल दे इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें कहिबा कोन करूचंती आपण माने सपोज आपण मानकर एना आपनकर फर्स्ट सेमेस्टर हैला फोर्थ सेमेस्टर बेल को आपण गोटे इंटर्नशिप अछि समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट एसआई हैला समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट जोटा कि आपण कोन करिवे ना आपण माने जिबे समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट जोटा कि इंटर्नशिप और हम ट्रेनिंग कहूचे सो सेट्रे आपण कोन करिवे ना आपण माने जाय कि गोटे टॉपिक सिलेक्शन करिवे एंड आपण गोटे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन करिवे एंड यू विल गो देयर एंड यू विल प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट तो आ माने कोन हैला so internship training kohuchi ki it is not only you will learn the theoretical aspects but also you will simultaneously you can learn the practical things a mane kon hela dharantu mu apano ko training gote chapter padheili
ट्रेनिंग ट्रेनिंग बोर्ड ट्रेनिंग टाइप्स ट्रेनिंग मेथड नो ए सब जो पढ़ेइले आपण एटा कोन करिवे प्रैक्टिकली एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग केमती दउची आपण कोठी कि जिवे नालको जिवे नालको एक्चुअली ट्रेनिंग केमती दउची को मेथड अडॉप्ट करची को टाइप अडॉप्ट करची कोन ट्रेनिंग अडॉप्ट करची सेटा आपण जेतेले जाय कि सेठी जेतेले जाय कि प्रैक्टिकली सिखिबे ना सेठी आपण कोन हैला ना यू कैन लर्न थियोरेटिकल एस्पेक्ट एज वेल एज द प्रैक्टिकल थिंग्स सो एडी कोन कहूची इंटर्नशिप ट्रेनिंग दुईटा आगो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दुईटा आगो जानिबा पई आमे लोकन को ऑर्गेनाइजेशन कोन करे हम लोकन को ट्रेनिंग दिया जाए सो दिस इज व्हाट द ऑन द जॉब मेथड ऑफ द जॉब मेथड different trainer different trainee different kind of environment and the basically the it is the of the job training method of the job माने कोन हैला एडी नाइ कि हमें प्लेस ऑफ वर्क रे सुपीरियर खाली ट्रेनिंग देबे ना एटा वैरायटी काइंड रो ट्रेनिंग हे परिबो वैरायटी काइंड रो लोकन को पई वैरायटी काइंड रो सिचुएशन रे सेटा कोन एठी असला आपण को रोल प्लेइंग लेक्चर मेथड conference and discussion case study simulation in basket cbt method variety method iti achi role playing kon kaiba ame se role playing it is a kind of training program role playing re kon karibe role playing basically ame we can say na apananku eti organization kon kare different person playing a different kind of role ta mane kon role play kole see suppose aje ame kaiba ke eti aje sales person se ke a salesperson immediately how the person will sell the product ta mane se kon role play kochi as a sales manager or as a salesperson suppose as a front office executive se kon role play karibo मान तार रोल कोन आज ए फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव से केमिते डील करिवो कहा से कस्टमर सहित गोटे सेल्स पर्सन केमिते डील करिवो कस्टमर सहित गोटे एचआर पर्सन केमिते डील करिवो कस्टमर सहित डिफरेंट पर्सन हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल एंड दे आर प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन नाउ इट इज बेसिकली हमें कोन कहबा ना सीएसई रोल ता द इंडिविजुअल पर्सन हाउ द पर्सन विल play the role in a effective manner that the organization providing training program so eti ame kon koche sei role se kemti play karibo how the person will effectively play the role seita ko ame eti कहले role playing method hela so different person different role play karibo se mane kemti karibe se ame kon kariba na we will provide the training program lecture method jota ki ame na adopt kariche ena kon ame ko method adopt koche lecture method ame na training dochu kaha ko student मान को this is called a lecture method conference training कोन conference and discussion training सब all the students you will be there in a one place and we will select a topic ame gote topic selection kariba जो topic रे के different person they will share their views and also you can also clarify your doubt जोटा कि ame कहले conference training case study method case study कोन कहूची ना ame एठी कहबे देखिबे जदि आपण पेरेंट्स बुक को जिबे एचआरएम रो धर गोटे बुक नेले ना से एचआरएम रो बुक रे जदि आमे आपण जिबे सबु चैप्टर रो लास्ट रे गोटे गोटे केस स्टडी दिया जाय छी धरन तो आपण भीएसपी राव बही देखिबे नले पी सुबाराम को बही बुक्स को देखिबे नै जदि आपण के असथापा बुक्स को देखिबे सबु बुक रो लास्ट चैप्टर रे गोटे गोटे केस दिया छै जेमति के रिक्रूटमेंट ऊपर गोटे केस दिया जायथिबो सिलेक्शन ऊपर गोटे केस कोन ना केस is a basically it is a case means it is a one kind of situation that the case it may be related towards the organization or it may be related towards a person गोटे लोक ऊपर थिबो कि गोटे ऑर्गेनाइजेशन ऊपर थिबो सेही पर्टिकुलर सिचुएशन दा धरंतु सिलेक्शन गोटे केस देथिबो सेटा गोटे लोक ऊपर देथिबो कि एई लोक एमती एमती सिलेक्शन रे एमती एमती हेइथिला सो सेटा को आपण सेठी कोन करिवे ना यू विल गो थ्रू द केस आपण केसटा को एनालिसिस करिवे स्टडी करिवे ताको सिटपे को हगला केस स्टडी सेठी किछटा तार क्वेश्चन थिबो आपण से क्वेश्चन को कोन करिवे ना अपन से क्वेश्चन को सॉल्व करिवे ता माने एटु कोन हबो ना थ्रू दिस केस स्टडी मेथड अपन जदि एमती कले नो यू कैन डेवलप योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एनालिटिकल स्किल प्रेजेंटेशन स्किल बहुत सारा स्किल अपन डेवलप पई दिया जाउची कोन केस स्टडी मेथड रे ट्रेनिंग सिमुलेशन मेथड वी कैन से इज a kind of real life situation आपण को रियल लाइफ सिचुएशन माने कोन ना बेसिकली हमें कहि simulation means the people they can face the real life situation ता माने हमें एटी कोन कहबा देखंतु हमें आपण को ट्रेनिंग दबु कोन गोटे ड्राइवर को ट्रेनिंग दबा हैला गोटे ड्राइवर को ट्रेनिंग दबा ड्राइवर रो काम कोन बस ड्राइव करिवो अच्छा जो हम बस ड्राइव करिवो हमें खाली ताको बस थ्योरी रे पाठ पढि बुझिलो एटा चक्का एटा स्टीयरिंग
हला तू एमती ब्रेक दबु एटा हला तू एमती करिवु से कोन बुझिबो सेटू जहा बुझिबो रियल प्लेटफॉर्म को गलालो पूरा धूमधड़ाक से एक्सीडेंट करिवो काहे त से तो किछ जानि नै आमे एठी एमती करिबा तार एक्जाक्टली जेमती हेई परिबो न बॉस जेमती हेई परिबो जहा जेमती सबु थिबो सेम त माने बॉस टा गणी कोन ऑर्गेनाइजेशन भीतर क्लासरूम रे रखिबा ना कोन सेटा तो पॉसिबल न हो ना पूरा जहा तार डिटो जहा थिबो पूरा एक्जाक्ट सेटा को आनी के हमें रखिबा कोठी से पर्टिकुलर एरिया रे गोटे डेमोन्स्ट्रेशन गोटे डेमो दबा न एया हला तमरो पूरा एंटायर सिचुएशन जोटे कि रियल लाइफ जोटे कि सी एक्चुअली रे जाय कि सेडी जेमती काम करि परिबो राइट सो धर गोटे ड्राइवर हैला गोटे रियल लाइफ गोटे डॉक्टर को तमे खाली थ्योरी रे पढेबो हैला से कोन बुझियो मनुष्य आखी कोडी अछि कान कोडी अछि ब्रेन कोडी अछि हार्ट कोडी अछि अच्छा आखी कानरा देखि पाला कोन ब्रेन हार्ट टा को किडनी कोडी अछि लिवर कोडी अछि आमे भी जाने से भी जानि परबा थ्योरी ए सब थ्योरी काम नुह तो एटी कोन करा जिवो तंको प्रैक्टिकली सेति पे कोन कहउचंती जो हमें डोनेट कर देउ एक आई डोनेशन करचंती ह्यूमन बॉडी पूरा डोनेशन एना गोटे लोक डोनेट करी गले कोन बरमपुर एमकेसीजी मेडिकल को गोटे महान व्यक्ति से तंकर डोनेट कले तंकर पूरा ह्यूमन बॉडी को से डोनेट करते फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स जोटा कि गोटे बहुत ये हे पाला भलो काम से सेटा हला सिमुलेशन मेथड रियल लाइफ सिचुएशन रे ट्रेनिंग दिया जिवो हला इन बास्केट मेथड कोन इन बास्केट मेथड कोन कहूची इन बास्केट हैला ऑर्गेनाइजेशन कोन कहूची बहुत सारा प्रॉब्लम कलेक्ट करची प्रॉब्लम माने कोन हमें कहबा कि आसे प्रॉब्लम तू सब जत्ते अच्छा कस्टमर सब हमको प्रॉब्लम दियो हमें ताको सॉल्व करिवो सेमते तो न ना जहार जहा प्रॉब्लम हैला धर हमें किछि प्रोडक्ट परचेज कले सो से रिलेटेड हमर किछि भी प्रॉब्लम हैला हमें कोन करिबा हमें ऑर्गेनाइजेशन को कोन करिबा हम प्रॉब्लम टाको जणैबा केमती थ्रू मेल थ्रू टेलीफोन और हमें कौन करिबा ना थ्रू एनी काइंड ऑफ वी कैन लॉज आवर कंप्लेंट हमें रिपोर्ट दबा सेटु कौन करिवो ऑर्गेनाइजेशन सबो आग कलेक्ट कर दबो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिकि से गोटे जगह तक स्टोर करिवो स्टोर करी कौन करिवो तो स्टोर करिकि से कौन करिवो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ए जो सबो प्रॉब्लम का हमें गोटे जगह रे कलेक्ट करिकि ताको जो सॉल्व करले ताको कौन कहला इट इज वी कैन कॉल एज ए इन बास्केट मेथड इन बास्केट मेथड को के सॉल्व करिवो दैट पर्सन जो लोक को हमें ट्रेनिंग देथिबा जो लोक से प्रॉब्लम टा को सॉल्व कर परिबो हैला सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जोटा कि हमें थ्रू कंप्यूटर हमें लोकन को ट्रेनिंग दबा हैला सो दिस इज द बेसिकली हमें कौन कहले ना दिस इज व्हाट द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग दिस इज व्हाट द आपनकर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग व्हाट इज ट्रेनिंग टाइप इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पूरा सुंदर भाव रे मन रखिबे आको एक्सप्लेन करिवे हैला सो दिस इज व्हाट आपनकर गला सब गोटे गोटे मेथड एटा खाली देखा हेची हां तापर ट्रेनिंग नीड असेसमेंट गोटे अछि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कोन ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हला हमें गोटे लोकन को केमती एक्सेस करिबा मान ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कहूची बिफोर कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द एम्प्लॉय वी हैव टू एनालिसिस ईच एंड एवरी एंगल बेसिंग ऑन दिस वी कैन कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें विदाउट एनालिसिस विदाउट हमें जदी जजमेंट जदी हमें ट्रेनिंग ता देले ना कोन हबो इट द ट्रेनिंग प्रोग्राम इट मे बी फेल द सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम मे नॉट बी पॉसिबल सो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट नीड को एनालिसिस करके ट्रेनिंग दबा प्लम्बर को प्लम्बर ट्रेनिंग दबा इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग दबा केते दिन रा ट्रेनिंग दबा केते पैसा खर्च होबो हाउ मच टाइम हाउ मच मनी हाउ मच एफर्ट हाउ मच रिसोर्स कोन कोन खर्च होबो ए सब एनालिसिस करके जो हमें ट्रेनिंग ता दबानी की दैट वी कैन कॉल एज ए ट्रेनिंग नीड एनालिसिस ट्रेनिंग नीड असेसमेंट और एल्स कोन हबो जदी आपण एनालिसिस करिवेनी इट विल टेक मोर टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी material everything wastage of time money everything successful training may not be possible right so training need assessment ame thi kon kariba na training need assessment it can we can analysis in a three way that is organizational analysis task analysis and people analysis organization ko first analysis kariba organization ro kon analysis kariba na what is the objective goal of the organization ताको हम एनालिसिस करिबा देन हम टास्क को एनालिसिस करिबा टास्क कोन ना टास्क हला कि हमें को ट्रेनिंग दबा काहा को ट्रेनिंग दबा ना कोन सेतिर हमर हाउ मच मनी हाउ मच रिसोर्स हाउ मच मटेरियल व्हाट दैट थिंग्स वी विल इन्वेस्ट देयर एंड पीपल एनालिसिस लोकन को एनालिसिस करिबा लोकन को कोन लोकन को हु इज द पर्सन व्हाट इज द परफॉर्मेंस व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल बेसिंग ऑन दिस वी विल कंडक्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम so this is what the training need assessment the level of training need assessment right so this is all about your training program dear students apanakara edi mane kon rakhibe what is training
what are the importance of training, what are the types of training, what are the methods of training, and what is training need assessment. I hope आपण माने भल्ल भाबे सुंदर रे बुझी जाइथिबे. We will discuss the कौन 5th unit, that is we will discuss a brief discussion करिबा का ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट IHRM, राइट, जोटा कि आपनकर पूरा कवर करछि 5th unit. कौन IHRM? See, international human resource management IHRM is the process of procurement or procuring, allocating, and effectively utilizing human resource in a multinational corporation. IHRM concept केबे स्टार्ट हैला? IHRM international human resource management where and when we can implement it. हमें को कोट implement करिबा, काहे के implement करिबा? Is it applicable in a domestic sector? जदि आपण international human resource management कहिबे, is it the concept, this is the concept, shall we apply in the हमें कहिबा कि जदि काहाकू ना ठिकना पतंजलि को हम अप्लाई करबा कि पतंजलि जो हमर अछि गोटे सेक्टर नो पतंजलि प्रोडक्ट ऊपर तारो ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करबा कि it is complete. Why? Because it can be applicable only the MNC sector, multinational corporation, right? So multi जदि हमर जो IHRM concept जेते बेला आसिला जेते बेला हमर बहुत widely accept करा गला जेबुठु हमर आसी गला LPG era, liberalization, privatization, globalization हमर आसी गला जेबुठु globalization आसी गला. So सेठी कोन हैला ना most of the foreign country it entered in the India, and Indian company also entered in the foreign country. समाने भी आसिले आमे भी गले जोटा कि बहुत जिंस हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करि पाले, राइट. ड्यू टू दिस रीजन ए IHRM कांसेप्ट आसला, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. हमें तबे पर्यंत डोमेस्टिक रहतिले, राइट. हमें कौन करतिले ना डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग सब दउतिले, बट इट इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, राइट. टाटा रो सपोज हमें जदि एटी नबा ना एग्जांपल ऑफ टाटा ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारा विश्व रे भी बिजनेस को रन करउची जेते बेले टाटा करछि ना. सो इंटरनेशनली से ह्यूमन रिसोर्स केमती करूछि रिक्रूटमेंट, केमती सिलेक्शन करछि, कोन करछि, व्हाट इज द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय टाटा टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स इन an international platform. See, अच्छा हां, तो एठी हमें कोन करबा ना, व्हाट वी विल डू हियर. सो हमें गुड सेकंड हमें एठी कोन करबा. सो बेसिकली वी कैन गो फॉर द व्हाट now the functions of international human resource management, it relates to same जहाँ आपनकर domestic HRM रे पढिचंती, that we will discuss in the international human resource management. It relates to recruitment, selection, training, performance appraisal, compensation, no, everything we will do in an international platform. It can be applicable only the MNC, those are the MNC sector, right. So एठी हमें कहिले कोन दो हमें तो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट पढिची नो. रिक्रूटमेंट हमें कोठी पढथिले ना, रिक्रूटमेंट पढथिले हमें डोमेस्टिक वाइज हमें रिक्रूटमेंट पढथिले. नाउ वी विल डिस्कस द रिक्रूटमेंट कांसेप्ट इन इंटरनेशनल वाइज. इंटरनेशनल वाइज हमें रिक्रूटमेंट केमती करछे, दैट वी विल डिस्कस हियर. सी, द इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट we can call as a EPRG formula. खाली डिफरेंस ता मु कहि देबी इंटरनेशनल और नेशनल रो भितरे जहा डिफरेंस अछि सेटा को मु खाली कहि देबी, बाकी सब आका हमें कॉपी पेस्ट कर देबा हैला. त माने कोन कहूची सुनतो, आपनकर सेठी रिक्रूटमेंट पढिथिले, रिक्रूटमेंट कम पढिथिले, व्हाट इज रिक्रूटमेंट, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, व्हाट इज द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नो, रिक्रूटमेंट कोन हम एडवर्टाइजमेंट कले, नो हमें ये कले कोन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, मेनी थिंग्स हमें अडॉप्ट करथिले. बट एठी हम जते बेले जिबा ए टिके डिफरेंस आसबो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रे. कोन सी, द international recruitment procedure, it relates to EPRG formula. EPRG कौन ना, EPRG formula हैला, this one is the EPRG formula. EPRG it relates to what ना, ethnocentric, polycentric, regiocentric and geocentric. This EPRG formula, this EPRG method, it is purely adapted to international recruitment procedure. हम एटी कोडी अडॉप्ट करछे ना, इंटरनेशनल भलो ध्यान रे सुनिबे. इंटरनेशनल जतले हम रिक्रूटमेंट करबा को जाउछे, सो एटी EPRG फार्मूला अडॉप्ट होछि.
अच्छा कौन अडॉप्ट करा जो ईपीआरजी फार्मूला से दिस ईपीआरजी फार्मूला सपोज आमे कहबा मु गोटे एग्जांपल देबी सेटा सब को पूरा एक्सटेंड करबी कोन ना धरंतु टाटा टाटा पई तर होम कंट्री हैला पेरेंट कंट्री हैला इंडिया पर टाटा इंडिया इज अ होम कंट्री और वी कैन कॉल एज अ पेरेंट कंट्री काहे कि टाटा इंडिया रो स्ट्रेटजी राइट well the tata will go for the tata जेतेबेले रिक्रूटमेंट करिवो will recruit the manpower for india then tata will no give more priority to the indian people india ro lokon ko more priority deba kahe ki because the indian people they know about the market they know about the what the society they know about the locality they know about the people they know about the customer they know about everything. So it is basically what we can give more priority to Indian people, local people, so that they can handle everything in a very proper manner. Right? So that is the meaning of ethnocentric approach. Once ethnocentric hala kono ame kodi kahaku recruitment kale home country lokonko parent country lokonko recruitment kale right Tata will operate its business at America. America रे से गोटे business start the set startup गोटे America रे गोटे तार कौन कला ना गोटे sorry America रे कौन कला गोटे business develop कला हैला जो अमेरिका रे जो बिजनेस ता टाटा डेवलप कला ना गोटे बिजनेस ये कला सेटअप कला सेति पई आमे कहिले एठी कोन ना फॉर टाटा अमेरिका इज ए होस्ट कंट्री नेशन आमे टाटा पई अमेरिका कोन ना हैला होस्ट कंट्री नेशन होस्ट कंट्री नेशन कौन कहीं ना बेसिकली आम से कौन करबा टाटा से तार से पूरा एकदम से प्रोडक्शन हाउस सब किछि से सेटअप कला जतले टाटा रिक्रूटमेंट करिवो गिव मोर प्रायोरिटी टू द लोकल पीपल दोस पीपल आर बिलोंग्स टू अमेरिका राइट से इंडिया तो लोक ने कि काम करि परिबनी कोन अजा लोक इंडिया रो ने कि बसैबो काम करिवो ना कोन इज इट पॉसिबल कंप्लीटली नॉट सो टाटा कोन करिवो से जो तार से बिजनेस स्टार्ट कला सोसाइटी पे से कोन करिवो ना विल गिव मोर प्रायोरिटी टू द लोकल पीपल सोसाइटी को सेटा को कोन कहला हमें पॉलीसेंट्रिक अप्रोच राइट इथनोसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक सेटा को हमें कोन कहले फॉर टाटा अमेरिका इज ए होस्ट कंट्री इंडिया हला पेरेंट कंट्री अमेरिका हला होस्ट कंट्री right and for tata it is we can call it is a polycentric approach acha ame jiba regiocentric manela region basis re regiocentric it is a third country nation right region basis रे ame jiba jetele regiocentric or region basis रे धरंतु ame एशिया पैसिफिक रो जदि आमे गोटे कंट्री रे बिजनेस हमर ये कले कोन प्रोडक्शन हाउस कले अदर कंट्री मान करे मे बी आमे प्रोडक्शन हाउस न करि पारे बट आमे कोन करबा आमे हमर रॉ मटेरियल आमे हमर एम्प्लॉय हमर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ए सब काम करि परिबा सो आमे कोन करबा थर्ड कंट्री नेशन जते सब कंट्री रहिले डिफरेंट रीजन्स पैसिफिक रे सो सेठी आमे कोन करबा वी कैन बेसिकली व्हाट वी कैन recruit the manpower in the different country also other country मान कर जोटे कि थर्ड कंट्री प्रोडक्शन हाउस हमर सिटी न थाई पारे बट हमर सिटी कोन थिबो धर आमे कहबे कि आमे इंडिया कोन कला चाइना रे गोटे कला आ गोटे कोडी कला हमर बिजनेस कला आमे एशिया पैसिफिक को जिबा चाइना रे कला हमर आ गोटे कोडी कला श्रीलंका रे कला हैला तो सेठी कोन करिवो से श्रीलंका रे तारो प्रोडक्शन हाउस नाही चाइना रे प्रोडक्शन हाउस अछि श्रीलंका रे नाही सो चाइना हम पई कोन हला व्हाट पॉलीसेंट्रिक होस्ट कंट्री श्रीलंका रे प्रोडक्शन हाउस नहीं बट हम से कोन करि परिबा लोकन को रिक्रूटमेंट करि परिबा रॉ मटेरियल आनि परिबा से सब हम करि परिबा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करि परिबा सेति हम कोन करिबा ना बेसिकली वी कैन कॉल इट थर्ड कंट्री एंड इट इज वी कैन कॉल एज अ regiocentric approach right then we can go for the geocentric means what tata will recruit the manpower all over the world सारा विश्व ब्रह्मांड रो हम manpower को recruit करिबा जोटा कि हम कोन कहबा ना we can call as a head hunting जोटा कि हमें कोचे best person we can recruit for our organization this is the geocentric approach ethnocentric polycentric regiocentric and geocentric these four concepts we can adapt at the time of international recruitment procedure right I hope आपण माने बुझी जाइथिबे then जिबा हमें कोन ना में जिबा सिलेक्शन रे एडी असला हमर कोन एक्सपाट्रिएट कांसेप्ट आसी गला रिक्रूटमेंट सिलेक्शन परे बाकी सब आपनकर समानता को ये कर देबे हैला सिलेक्शन कोन कहूची जेतरा हम सिलेक्शन करबा काहा को सिलेक्शन करबा ना आज सपोज वी वांट टू सिलेक्ट सम पर्सन वी वांट टू सेंड सम पर्सन वेल द पर्सन इट इज वर्किंग इन इंडिया किछि लोक अछंती इंडिया रे काम करछंती हैला इंडिया पीपल्स आर बिलोंग्स टू इंडिया जोटे कि हमें कहबा आज एक्सपाट्रिएट पर्सन आज इथनोसेंट्रिक नो लोक माने
आमे कौन कले ना लोकों को इंडिया 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 हमर इंडियन मींस हमर कोडी टाटा कौन कला तर इंडिया पाई बोली लोकों को रिक्रूट कला राइट कोडी इंडियन पीपल को राइट तो आमे टी कौन करिबा किछटा लोकों को सिलेक्शन कले कौन सिलेक्शन कले ना वी विल सिलेक्ट सम पर्सन टू send the person कोटी के send करिबा ना we will send the person to the host country parent country रो host country को से लोको को send करिबा it may be we can send the person third country also right हमें parent country रो हम subsidiary जोडी अछि ताको पठै परिबा से country को पठै परिबा और हमें third country को मते पठै परिबा जिते बेले हमें लोकों को suppose we will select some person those are staying in India working in Indian organization जोटा की तो आमे जो लोगों को आमे सेंड करिबा कोठी को होस्ट कंट्री और थर्ड कंट्री को वी कैन कॉल एज ए एक्सपैट्रिएट सिलेक्शन आमे जिते सिलेक्शन करिबा ना इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वी कैन कॉल एज ए एक्सपैट्रिएट सिलेक्शन एक्सपैट्रिएट माने कोन आमे गोटे बेस्ट लोगों को सिलेक्शन करले जो लोग को दैट पर्सन विल गो देयर say loko se diki jibo ko diki jibo it may be the host country it may be the third country and the person will go there and handle the entire business in that particular country say country ro gote business ko handle karibo it may be a certain duration of time it may be a longer duration of time that we can call as a expatriation and expatriate hela selection impatriate kahiba impatriate kon na impatriate hela jitte bele sei jo country re jo lok आमर इंडिया रू गला सब्सिडरी को अमेरिका को इंडिया रू गला चाइना को कि इंडिया रू गला अदर कंट्री को जोटा कि हमें कहले एक्सपैट्रिएट हैला सेमती हमें कोन करबा अमेरिका रो गोटे लोक को आनले इंडिया को अमेरिका रे हम सब्सिडरी अछि सेठु हमें कोन करले गोटे लोक को आनले का को इंडिया को आनले काहे के आनले ना दैट पर्सन विल कम हियर एंड द पर्सन विल हैंडल सच काइंड ऑफ responsibility ना द पर्सन विल हैंडल सच काइंड ऑफ टास्क सेति बा हमें ताको सेड कोन करबा आनिबा अमेरिका रे गोटे बेस्ट व्हाट एम्प्लॉय को इंडिया को सेटा को हमें कोन कहबा ना इम्पाट्रिएट सिलेक्शन जतेले गला ताको को आगला एक्सपाट्रिएशन जतेले आसला ताको को आगला इम्पाट्रिएशन सो सिलेक्शन while we will go for the selection then we can adopt the expatriate and impatriate process जेते हम adopt करिबा जेते हम पठोचे एक्सपाट्रिएशन कहबा हमर चाहे से सब्सिडरी ये एरिया को हो कि हमर थर्ड कंट्री के हो राइट हमें कहबा एक्सपाट्रिएट जेते से लोक समति गोटे लोक को आनिबा हमें कहबा एज ए इम्पाट्रिएट राइट रिपाट्रिएशन प्रोसेस जोटा कि एक्सपाट्रिएट इम्पाट्रिएट रिपाट्रिएट तमर सिलेक्शन रो गोटेला पार्ट पूरा ताकू ही हम सिलेक्शन प्रोसीजर रे नबा सो रिपाट्रिएशन कोन कहूची रिपाट्रिएशन कहूची जो एक्सपाट्रिएट जाइथिबो ता काम सला पर से कम बैक करिवो तार होम कंट्री को राइट द एक्सपाट्रिएट after completion of its work the expatriate will come back to its home country then we can call as a repatriation right so expatriation impatriation repatriation we can adopt in the selection procedure at the time of international platform right so this is all about your recruitment and selection जेतेला हमें कोन करिबा सिलेक्शन कले रिक्रूटमेंट कले देन हमें जेतेला ट्रेनिंग दबा ना ट्रेनिंग हमें कोन ट्रेनिंग दबा लोगों को हमें तो ट्रेनिंग देले ऑन द जॉब ट्रेनिंग देले ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देले नो सेठी हमें कोन ट्रेनिंग दबा ना on the job training of the job training it is the basically apart from this aku to chhada eta tela common training we will give the training that is the language training suppose you'll go to America so while you will go to America so how you will speak to that locality no samana ko sito kemiti tumko American accent asuchi nale na kon kaibo seti khaiba ko miliboni bhok kare rohi ki asibo hela so seti ame kon kariba na that is the very much important is the language training very much important it is a basically culture training how you can adapt their culture sei culture se to tumko am acquainted age karibu tapare patheibu ना आउ जदी सेट जाय कि कहबो इंडिया रो लैंग्वेज कहबो तेलुगु कहबो ओडिया कहबो सेट जाय कि सेडी केहि भी एक्सेप्ट करिबेनी राइट सो you have to more proficiency related to their language you have to more proficiency you have to know aware about their culture no you have to basically what so you have to know that much of manners so all environmental things no sensitivity field experience everything it is required to the individual person so basing on this you can go there and you can work you can settle there or it may be certain duration of time or it may be the longer duration of time right so this is what the training program so apart from this hame compensation madhya daba kono jete expatriate as expatriate jibo na तुमको हमें कौन करिबा expatriation हमें गलो so सेटु हमें कौन करिबा it is a responsibility of the organization
the organization have to take every responsibility of the expatriate. तार सब responsibility है ला आमर इंडिया रे 50,000 पाउथुला अमेरिका गले भी 50,000 पाइबो ताले सेठी जीवो काहेकि 50,000 अमेरिका रे can you sustain in this much of amount अमेरिका रे वो को पैसे रही के आसीबो सो सेठी कोन करिवो ना we have to take care your entire things no पूरा start journey start करिबा to as a repatriation process पर्यंत expatriate to repatriation entire responsibility it is the or your responsibility it is the organizational responsibility organization will take care your entire things no कोठी रहिबो कोन खाइबो केते सैलरी पाइबो केते इंसेंटिव पाइबो केते हाउस रेंट पाइबो कोन करिवो केमिति करिवो that is the entire responsibility that is the responsibility of the organization and you have to say am expatriate को सेमती ये करिबा and your performance must be the excellent performance the performance को हम प्राइस करिबा से टेक्निक हम अडॉप्ट करिके so this is all about your international human resource management concept हम एटी कोन अडॉप्ट करिबा EPRG को अडॉप्ट करिबा expatriate impatriate अडॉप्ट करिबा जोटा के सिलेक्शन प्रोसीजर है ट्रेनिंग बला हमें कल्चर ट्रेनिंग देबा कम्युनिकेशन ट्रेनिंग देबा प्रोफेशनल ट्रेनिंग देबा ए सब हमें ट्रेनिंग देबा आउ तमोर एंटायर कंपेंसेशन फैसिलिटी हला सेही बेसिक टीए डीए एचआरए सीसीए नो सब हमें प्रोवाइड करिबा right so this is all about your IHRM international human resource management that is there in your 5th unit I hope dear students आपण माने पूरा सब बुझी जाइथिबे I hope wait a moment आपण मानकर कोन मोइना क्वेश्चन डिस्कशन करते हैला अच्छा की दीपक रे दीपक 2 वे कर देई थान तो पथिबो अच्छा छाड़ पिला माने दीपक तो नाही मु जहा जहा क्वेश्चन कहूची सब लिखि दबो हैला नो मैम ही इज नॉट देयर अच्छा सो बुझी गले ना स्टूडेंट्स एना क्वेश्चन लिखो आउ मैम सुबा गलानी बुझा गलानी आउथरे कोन तो कहबनी पूरा ध्यान पूर्वक सुनियो समस्त भल से क्वेश्चन लिखिबो हैला आउथरे कोन तो एडिया होबनी यूनिट 1 टू लिख लिखा जिवो एक्सपेक्टेड सब क्वेश्चन एति के प्रिपेयर करिब हां बीट स्लोली पूरा स्लोली कहबी মই ना काहेंगे स्पीड पढौतली काहेंगे ना तमरो कोर्स सरीली मु स्पीड पढौतली नले स्लो पढै तांती हला मु जदी स्पीड न पढै तो कोर्स सरीबनी एटलीस्ट किछि तो गुट आईडिया नेकी क्लास को जिवो एग्जाम को हला तो चलो लेट्स वी विल स्टार्ट यूनिट 1 ओके वेट अ मोमेंट लेखो यूनिट 1 ला यूनिट 1 रे लेखो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट briefly explain what is human resource management briefly explain the objectives nature and scope of human resource management objectives nature and scope of human resource management hela question 2 unit 1 ra second question define HRM briefly explain the growth and development of HRM and also explain say question रे लिखिबो and also explain the functions of human resource management define HRM briefly explain the growth and development माने कोन कहतली evolution हैला evolution रे कोन आइसला evolution रे तमरो स्टार्ट करथिले कोठी commodity concept to human resource development concept growth and development evolution of HRM
and also explain the functions of human resource management. पूरा function टाको से explain कर हैला कोना managerial function operative function पूरा टा गला second question सरला third question unit 1 रा third question सुनो सेठी गोटे student गोटे जिंस मन रखिबो पूरा भल्ले से सुनो तमर एठी गोटे concept देछि HRM practices in India धर सेठू पचारा गला व्हाट इज द सपोज गोटे आमे कहिले टाटा तो गोटे एग्जांपल नै गले टाटा सी कोन एचआरएम प्रैक्टिस करछ इंडिया रे गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो ना नै कि लेखाला व्हाट इज द एचआरएम प्रैक्टिसेस इन इंडिया हाउ द एचआरएम कांसेप्ट अडॉप्टेड बाय द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन तोर गोटे क्वेश्चन पचारलो आमे रे कोन करियो कहिलो कोन लिखिबो सेठी कोन करिवो सेई किछि आखि बंद करले लिखिबो केमती नो पूरा सही कॉन्सेप्ट रिक्रूटमेंट टू रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन आमे एठी कहिले प्रैक्टिसेस इन इंडिया कहिले आमे अमेरिका कहिले कि ऑस्ट्रेलिया कहिले कि नो सेठी हेले तो आईएचआरएम कॉन्सेप्ट आसीबो ध्यान रे सुनिबो आईएचआरएम कॉन्सेप्ट आसीबो सेठी सिना तो इथोनोसेंट्रिक एक्सपार्ट्रिएट अडॉप्ट करिवो एठी तो दरकार नै तुम गोटे प्रैक्टिसेस इन इंडिया कह जाई तमाने तुम कोन करिवो स्टार्ट कर देबो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल जहा फंक्शनल एरिया नै पूरा फंक्शनल एरिया टा हला तमरो प्रैक्टिसेस इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रे सुनथिबो जोटी क्वेश्चन असला ताको सेटा दबो गला थर्ड क्वेश्चन लिखो who can be a manager what are the role skill and functional area of a manager role कोन गुड मैनेजर कोन रोल प्ले करे हला तार स्किल कोन रोल कोन इंटरपर्सनल रोल पढिचो सार पढैथिबो ऑलरेडी एमसीपी रे हला मेंचा रोल अछि इंटरपर्सनल रोल इन्फॉर्मेशनल रोल डिसिजनल रोल हां तापर असला कोन रोल आजे ये फिगर हेड लीडर रोल आजे मॉनिटर रोल आजे कोन ग्रीवांस हैंडलर रिसोर्स एलोकेटर जहा रोल भाबिलो सब लिखि दबो किछ असुविधा नै हला रोल इंटर कोन असला हां रोल कोन स्किल कोन कम्युनिकेशन स्किल प्रेजेंटेशन स्किल इनोवेशन स्किल इंटरपर्सनल स्किल राइट तापर असला कोन ना ह्यूमन रिलेशन हैंडलिंग स्किल नेगोशिएटिंग स्किल डिसीजन मेकिंग स्किल बिहेवियरल स्किल जहा स्किल भाबिलो निजे कोन कहली हु कैन बी ए मैनेजर भाबो से यू आर द मैनेजर तुमे हेलो मैनेजर तुमरो कोन रोल रहबा दरकार तुमरो कोन स्किल रहबा दरकार सेटा को सेडी जस्ट लिखिबो हला स्किल रे कोन आ फंक्शनल एरिया कोन सही functions of a HRM functional area of a HR manager both are same HR practices in India similar तीनटा को समान नल्ला functional area of a HR manager say managerial function operative functions of HRM say managerial function operative function HR practices in India say practices say आपनकर managerial function operative function हे गला ओवर चलो unit 2 what is human resource planning briefly explain the objectives and methods of human resource planning सुनो एठी कहि दो अगेन मेथड्स आउट टेक्निक दीटा को समान सेठी मेथड्स न आसी थोड़ा टेक्निक पळे आसला कहबो टेक्निक गोटे पुनी कोन आसला मैम तो किछ कहि नथिले सेठी कंफ्यूज होबनी हला से डिमांड सप्लाई फोरकास्टिंग से जो प्रोसेस टा को पढैची प्रोसेस मेथड टेक्निक तीनटा को समान आसीबो से मेथड पचारू प्रोसेस पचारू टेक्निक पचारू ताको गोटे लिखिबो जोटे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तापर हमें कोन कहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डिमांड सप्लाई तापर आसले नेट मैन पावर रिक्वायरमेंट जोटा कि हमें करछे एक्शन प्लान हैला डिमांड अंडर रे तीन चारटा टेक्निक लिखि देबो सप्लाई अंडर रे तीन चारटा टेक्निक लिखि देबो ऑलरेडी मु पढैची भलो भाबरे बुझैची हैला सो सेटा हला व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग what are the objectives and methods of human resource planning method technique process सब हला समान चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो what is recruitment अछि तो human resource planning पर हां what is recruitment briefly explain the different sources of recruitment what is recruitment
Briefly explain the different sources of recruitment. Sources, types, methods सब समान already कहिछि. Sources जहा, types जहा, method मध्य सेया. हैला. So एटी कोन हैला? Sources आछु. सेटी ये करी को लिखि दउथबो सेटी sources, types, method सब हैला समान. हैला. So what is recruitment? What are the sources of recruitment? So type पचरु कि method पचर ताको ही लिखिबो. Next हैला what is selection? Briefly explain the process of selection and types of interview. Briefly explain the process of selection and types of interview. Process of selection, screening application to employment पर्यंत गोटे process पढैतिली. Types of interview, one-to-one interview, sequential interview, panel interview, stress interview, group interview, बहुत सारा interview पढिछ हैला ताको सेडी भल भाबरे लेखिबो हैला. Then चलो तमरो सेटी गोटे अछि factor. What is induction and how? What is induction? एटा तमरो केते 5 मार्क क्वेश्चन. कोन induction and what are the objectives of induction? What is induction and orientation and what are the objectives of induction? एटा 5 मार्क क्वेश्चन. बाकी सब आके लॉन्ग क्वेश्चन रे कहिछि हैला. चलो यूनिट 3. What is performance appraisal? Briefly explain the objectives and methods of performance appraisal. What is performance appraisal? Briefly explain the methods and objectives and methods of performance appraisal. हैला. Methods कोन? Traditional method, modern method. Traditional method कोन? essay method, तमरो कहितली ranking method, rating method, force distribution method, right? Checklist method. Modern हैला कोन? 360 degree appraisal, MBO, bars, बहुत सारा जिंस पढैतिल सेठी हैला. ताकू लेखेबो सेठी, right? Then चलो 8 मार्क रो क्वेश्चन. What is transfer? Briefly explain the different types and purpose of transfer. What is transfer? Briefly explain the types and purpose of transfer. Hala. What is promotion? देखो 28 तमरो इंटरनल क्वेश्चन 5 टा, एक्सटर्नल क्वेश्चन 15 टा, टोटल 20 टा क्वेश्चन पका हबो. सो से अनुसार को सब गोटे गोटे करी प्रिपेयर करियो. किछि छाडीबोनी को मैं माको छाडीबी ताको छाडीबी ए यूनिट छाडीबी सेमति करिवो. किछि होबोनी, सब आगो पढिबो हैला. जा जा क्वेश्चन कोछि सब आगो कंप्लीट करिवो. What is promotion? What are the different types and basis of promotion? छोटा पूरा मैक्सिमम तमरो एटा आसीबो केते 5 मार्क न 8 मार्क क्वेश्चन हैला. तो कोन टाइप्स एंड बेसिस ऑफ प्रमोशन. टाइप्स कोन तमरो आसिला टाइप्स कोन कहितली. बेसिस हला कोन? मेरिट बेस, सीनियरिटी बेस, मेरिट कम सीनियरिटी बेस. और टाइप हला तमरो ड्राइव प्रमोशन, प्रमोशन अपग्रेडेशन. सरी गला ट्रांसफर गला प्रमोशन. और गोटे और लास्ट लेखो व्हाट इज एम्प्लॉय सेपरेशन. व्हाट इज एम्प्लॉय सेपरेशन and what are the methods of separation or types of separation. What is employee separation? What are the methods, or we can call as a types of employee separation. Hala. So kon कहले डी performance. What is performance appraisal? Third unit रे kon what is performance appraisal? What are the objective and methods? Hala. तापरे पळे आसा what is transfer. What are the types and purpose of transfer? Purpose, objective, दुईटा को समान. Importance तीनटा को समान हैला. What is promotion? What are the types and basis of promotion? What is separation? What are the methods of employee separation? चलो unit 4. Unit 4 हैला. What is compensation management? What is compensation management? Briefly explain the objectives and components or types of compensation management. Types, components, दुईटा को समान हैला. So what is compensation management? What are the objectives or objectives, types or
components दुईटा का समान of compensation management हला लिख लो what is wages and salary what is wages and salary unit 4 second question what is wages and salary what are the methods and policy adopted by India to provide wage and salary what are the method and policy wage policy in India कहतली minimum wage fair wage living wage time wage piece wage right method कौन तमर आसी गला piece और जो हमर कौन wage board pay commission हाँ सब आको थिला सेठी so से सब हला method की adopt करची India adopt करची ए वाइज हमें कौन करचे wage provide करचे कला third question लिखो what define training briefly explain the importance types and methods of training importance types and methods of training हला लिखिलो पिला माने आई होप कि लिखिथिबो अच्छा what is training need assessment what is training need assessment what are the levels of training need assessment what is training need assessment what is the level of training need assessment हला unit 4 complete unit 5 को चलो what is international human resource management briefly explain the recruitment and selection procedure briefly explain the recruitment and selection procedure adopted by international organization hala what are the difference next question what are the difference between domestic and international HRM domestic hela kona within the boundary of country international hela kona international kona boundary within the country international hela kona it is there in the it is a world it is we can operate its business within all over the world right so ti kon kahila so what is the difference between international and domestic HRM briefly explain the training and compensation benefit provided by international organization हला this is a data question मन रखिबो कहा related कोना ना related हला तुमरो unit 5 so students तुमरो हला कोना unit 1 2 3 4 5 सबु किछि तुमरो कोन हिची complete हला पूरा complete करची मु as per your syllabus question रहला एया आकु हला पूरा हमें question रे रखिले पूरा सब unit रो कोन करबो पाठ केमती पढिबो please repeat the last question what is the difference between international domestic and international HRM and briefly explain the training and compensation benefit provided by international organization हला training and compensation टाको explain करिवो तमे mostly मन रखिबो कोडा कहिलो मोस्टली मन रखिबो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन टाको भलरे मन रखिबो ईपीआरजी आउ जो तमरो एक्सपाट्रिएट इम्पाट्रिएट को हैला मैम यूनिट 4 लास्ट क्वेश्चन प्लीज यूनिट 4 लास्ट क्वेश्चन कोन आ एमी आ हैला ता सेहिति पई कहितली गोटे गोटे मु कोन मन रखिची
यूनिट 4 लास्ट क्वेश्चन कर दिला मु सेति पय कहितली गोटे गोटे पूरा ध्यान रे मन रखियो भल से सुनिबो कहि की हैला स्टूडेंट्स सो आई होप तमरो सिलेबस कंप्लीट हे गला हां तमरो सिलेबस कंप्लीट हे गला तमरो क्वेश्चन भी हे गला तमरो ये कोन तमरो हमरो कोन सिलेबस धरिबो क्वेश्चन धरिबो ये कोन माने बही धरिबो आ तमरो आमे देई देबो तुमको मटेरियल सब हैला सर देई देबे मटेरियल देई देबे सब सब दिया हबो जम्मा व्यस्त होनी सब दिया हबो असाइनमेंट क्वेश्चन आ भितरु ही आसीबो असाइनमेंट क्वेश्चन आमे दबो वेबसाइट रे डोंट वरी अबाउट दैट हैला असाइनमेंट क्वेश्चन आमे ये रे दबो तो सेति पय तुमे कोन करबो असाइनमेंट क्वेश्चन सब दिया हबो आ भितरु ही असाइनमेंट क्वेश्चन दबो आकु तुमे एति के पढी दियो आकु पढी देला परे असाइनमेंट क्वेश्चन फाइनल एग्जाम सब कंप्लीट हे जो डोंट वरी अबाउट दैट सब आकु एति के फिनिश कर हैला सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 1 2 3 4 5 सब दिया हबो सब दबो कोन कहला असाइनमेंट क्वेश्चन 30 मार्क दीटा क्वेश्चन आसीबो 15 15 हैला आ भितरु ही पकाबो आउट ऑफ द वर्ल्ड किछि पका हबोनी जहा पकाबो आ भितरु पकाबो आ कोई एति की फिनिश करियो पूरा बेस्ट टू बेस्ट रखिबो आ तमे एग्जामिनेशन मापड़ो खापड़ो लेखिबोनी पिला माने जहा लेखिबो भलो लेखिबो टू द पॉइंट लेखि सुंदर भाबो लेखिबो सब किछि मटेरियल दिया हबो डोंट वरी अबाउट दैट हैला दिस इज ऑल अबाउट योर सब एचआरएम पेपर थैंक यू सो मच चलो आई होप कि एग्जाम रे बेस्ट करिवो आ आई होप कि माने पूरा कोन आउट ऑफ 100 80 खंडे जेमती हेले रखिवो कारण एते परिश्रम कल हैला मैम भी कले स्टूडेंट भी करछंती सो आई होप कि बेस्ट टू बेस्ट करिवो एग्जाम रे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच हम दे देबो मटेरियल भी दे देबो सब दे देबो तमे खाली पढो हैला भलो से पढो भलो से एग्जाम करो आउटपुट सेठी देखा थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट चलो एग्जाम रे देखा हबो हैला।